The tea is always fantastic. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? आज मैं आया हूँ एक मलयावरी रेस्टोरेंट में। मेरा एक फ्रेंड मिला है तो वो मुझे लेके आया खाना खिलाने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया का खाना कैसा होता है। आइए तो चलते हैं बिना किसी देरी के रेस्टोरेंट के अंदर। खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो हमने हाथ धोए। So should I tell you the names of what they called? Yeah. It's parotha. Parotha. This is pork roast. Potros, yeah. Yeah, pork roast. Yeah. This is mutton biryani, the famous Marwari. Mutton biryani, yeah. Chicken biryani. Chicken biryani, yeah. I had a chicken biryani. And this is paripukutan. Paripukota, yeah. Paripukutan. Paripukota. And this is the papadum. Papadum. We have sarlas Yeah. and achar. अच्छा, that's good. तो ये मेरे फ्रेंड मुझे कह रहे हैं कि आज हमारे स्टाइल में बिरयानी खाओ। तो ये रायता पड़ा है। What do you call that in your language? Sarlas. Sarlas. So we need to pour it, yeah? Yeah. Like in here. Yes. I'll eat for you. Do I need to mix it, yeah? Yeah, with some achar too. This is lemon pickle. If you want, I can. I guess you need to do everything with the hand. That's what I was doing with the hand. Yeah. Yeah. Now you can mix them. In here, yeah? And a popcorn too. You mix all this together. How do I'm supposed to eat papadomas with that? Not much achar. Yeah. Only some achar. Yeah. Crush the papadum. Now mix it with the rice. Take some sarlas, take some achar together. It's like that one. Yeah. Man, it's something new experience. Never had that in my life. जैसे पापड़ी होते थोड़ा उसका टेस्ट आ रहा है, बट इट्स समथिंग डिफरेंट. इट इज समथिंग डिफरेंट मैन. More of the biryani, less of papram and condiments you get. Yeah. Or else you get the taste of papram, just papram. It would be. Although I was full, the biryani felt so nice there. I had eaten it a lot. Meat is cooked to perfection. Yeah. Karak tea, yeah. Karak tea would be fine. Yeah. I just ordered the Karak tea, so let's try the Karak tea from the Kerala restaurant. I hope it's gonna be like the Pakistanis. So let's try this out, mate. फाइनली चाय हमारी आ गई है, कड़क चाय. देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है. तो इसमें ये रेड कलर का आप सैफरन भी देख सकते हैं. So let's try the tea. It's like ours. Yeah, it tastes a bit different, but it's almost like ours. They're for the same reasons. बहुत ही कड़क चाय है, मज़ा आ रहा है. The tea is always fantastic. आज काफ़ी खाना खा लिया. तो ये एक फ्रेंड मिले थे केरला के, थे इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है.
बहुत यूनिक कंसेप्ट है इस रेस्टोरेंट का। तो थैंक्स टू दिस गाय। ये वो वीडियो पे नहीं आना चाहता तो उसी ने मुझे यहाँ पे स्पेशल लाया है रॉयल लेक से। यहाँ पर वो मुझे टैक्सी में ऊपर पे ले गया है, बड़ी एक्सपेंसिव ऊपर पड़ी है, बट उसने बहुत खुश होकर मुझे बाकायदा इनवाइट किया, यहाँ आओ, यू विल रियली लाइक इट। So to be really honest, I had biryani, I had beef, I had roti as well, and I really enjoyed it. Nice. Although I was really full, but still I ate a lot. So it was still like I'm feeling a bit hungry as well because the food was really light. अभी बस मैं थोड़ी देर में ट्रेन वापसी की लूँगा तो बस जाऊँगा मैनचेस्टर। हाँ, मैं तो फुल हो गया भाई, बहुत खाना खा लिया, फुल हो गया। तो ये था व्लॉग मेरे रेस्टोरेंट का, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप भी जब लिवरपूल आएँ तो ग्रीन चिली रेस्टोरेंट में लाजमी आएँ, इनका फूड बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है। इवन तो यू आर गोना लाइक द फूड इज़ सो लाइट, इतना हैवी। तो बैकपैक मेरा तैयार है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अभी मैं वापस जा रहा हूँ ग्रीन चिली रेस्टोरेंट से। लेट्स गो गाइस। तो ये था ग्रीन चिली रेस्टोरेंट का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।